Any guesses? Right, so this one is your question. So lambda you are given 71 picometer and BR की वैल्यू आपको दी हुई है, that is 1.88 into 10 to the power minus 4 TM. So kinetic energy find करनी है. Kinetic energy is 1 by 2 mv square. So first thing you need to do is you have to find the value of V. Okay, so V के लिए वो circular path वाली formula use करेंगे. R is equal to mv by qb, from which you will get the V and that you will be substituting over here. So that from that you will get the kinetic energy. Second part जो है, in that you have to find work done. So work done is energy minus maximum kinetic energy, right? Photoelectric effect वाली formula. E is hc by lambda. Okay, so work done is hc by lambda minus kinetic energy. From that you will get the value of the work done. ठीक है? So please verify your answer. So L division students, have you done this sum? ये ट्यूटोरियल 3 हो गया है आपका? नहीं हुआ है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे के 3 सम्स मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी. ओके, पहले लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन आगे के जो 3 सम्स हैं दैट वी विल डू. मैम ये 4 बजे वाली क्लास हो रही है? नहीं, ये कहाँ 4 बजे वाली है? मैम किसी ने ग्रुप में लिंक डाल दिया हमारे. कौन से डिवीजन? एम डिवीजन? एल. और रे तो पूरा क्लास आ गया. कोई बात नहीं, आने दो, पढ़ लो. जिसमें मैं ट्यूट लेती हूँ वो आज अंकुर सर कुछ नहीं है, इसलिए अंकुर सर वाली जो बैच थी ना, सो दैट उसके लिए अंकुर सर ने मेल में भेजी है ये लिंक. हाँ, L1 पे लेते हैं मैम. हाँ, पढ़ लो, कोई बात नहीं, आगे के 3 सब मैं करवा दूंगी आपको. वैसे भी आज ईएस होगा नहीं आप लोगों का? ईएस है ना सेशनल में? नहीं मैम, टेट्रा ही है. टेट्रा ही है. यस मैम. देख लो, समझ लो, ऐसा है तो मतलब कैलकुलेशन बाद में करना. आई विल एक्सप्लेन यू द सम्स. ओके, अभी आ ही गए हो तो फटाफट सम्स कर लेते हैं. वैसे भी आपकी 4 बजे वाली क्लास तो आज होगी भी नहीं, सो बेटर यू लर्न. पढ़ लो थोड़ा. सो फोर्थ सम डन. यू आर गेटिंग द आंसर ऑल ऑफ यू. काइनेटिक एनर्जी 3.1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है. और वर्क 14.4 आ रहा है या 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है? Can you please tell the answer? Have you done sum number 4? कोई तो जवाब दो. रेडियस नहीं, देखो, you are not supposed to take the radius. What you are given for the fastest, you just read this line. The product BR is given by this, मतलब B into R की वैल्यू आपको ये दी हुई है. So no need of taking the radius separately, right? BR is 1.88 into 10 to the power minus 4.
ये प्रोडक्ट पूरा आपका 1.88 इंटू 10⁻⁻⁴ है ही, राइट? तो ये बी आर की वैल्यू तो आपको दी हुई है. मैम हाँ, वर्क डन की वैल्यू 13.8 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट आ रही चलेगा चलेगा चलेगा. ये एच की वैल्यू क्या लेते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा ये डेसिमल पॉइंट डिपेंड करेगा, इसीलिए एच सी मतलब पर्टिकुलरली एच ओनली 6.6 या 6.626. सो क्या आगे जाए? कैन आई मूव फर्दर? अगर हो गया हो तो आगे जाए. ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो किसी ने तो आंसर मतलब रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया. फाइन. फोर्थ वन सेम है. लेट मी चेक. The light of wavelength 2.0. Okay, it's same only. The light of wavelength 2.4 picometer is directed on a target containing free electrons, right? So you are given the value of lambda, and lambda is 2.4 pm. Find the wavelength of the light scattered at 30 degree. You have to find lambda dash when theta is 30 degree. Repeat the same for the scattered angle at 120 degree. So दो आंसर्स, दो चीजें फाइंड करनी है. You have to find lambda dash when theta is 30 degree, and similarly you have to find lambda dash when theta is 120 degree, right? So you will be using this formula, lambda dash minus lambda is equal to h upon mc 1 minus cos theta. Okay, so first you take theta as 30 degree. Lambda की वैल्यू आपके पास है, so you need to take this towards the other side, so you'll get lambda dash. Similarly, you find lambda dash when theta is 120 degree, right? So दो आंसर्स आपको लाने हैं. So solve it. ये तो आ रहा है 2.7 पिकोमीटर और 6 pm, ऑलमोस्ट सेम. राइट, यही आ रहा है ना 2.7, करीबन 2.7 जितना आ रहा है, राइट. फॉर द अदर केस
Right. So all of you are getting this same answer? Six and 2.7. So okay fine, ठीक है, let us move on to the other sum. ये भी आप लोग खुद कर देना, थोड़ा मतलब it is little bit lengthy. So I will just explain you what you are supposed to do, and then I think you will be able to do it. Sum number 5. A particle is in motion along a line between x equal to 0 and x equal to a with zero potential energy at the points for which x is less than 0 and x is greater than a. The potential energy is infinite, right? So what is the case? If you see here, a particle is there inside a box. The boundary conditions are x equal to 0 and x equal to a. Its potential energy is 0 inside the box, and outside the box it is infinite, right? So v equal to 0 and infinity outside the box. The wave function for the particle in nth state is given by, you are given the wave function, right? Psi n, nth state matlab psi n is a sin n pi x upon a, right? ये गलत है, n pi x upon a ऐसे आएगा, right? Find the expression for the normalized wave function. So ये तो बहुत easy हो गया. You have to find the expression for the normalized wave function. We have derived in the theory of a particle in a box, right? जो final wave function था, boundary condition लगा के, when x equal to 0, psi is 0, x equal to 0, psi is L. हमारे केस में क्या था? x equal to 0 और x equal to L, जो हमने थ्योरी डिराइव की, राइट? वहां पे psi equal to 0, psi equal to 0. So ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमने लगाई थी, तब we got the equation as psi is equal to a sin n pi x upon L मिला था. यहाँ a की जगह पे we were having L, right? Then what we did, we applied the boundary conditions, right? And then finally we got the equation. Now if your function is normalized wave function, what we will do, for a normalized wave function, psi square dx equal to 1. Fine. So in our case, what is the boundary conditions? 0 and a, right? So 0 to small a, psi square dx is equal to 1, right? Then after you go for the boundary condition, apply, substitute that values 0 to a square sin square n pi x upon a dx equal to 1. यहाँ से you will be getting the value of a as under root 2 by small a, right? As under root 2 by small a, because यहाँ पे L की जगह पे a है. Then you substitute the value of a over here. So that will be your normalized wave function. Sin is equal to under root 2 by a sin n pi x upon a. ये आपकी equation होगी, right? This we have already derived. Okay. So you can just go from see it from the theory, and एक ही जगह पे L था वहां पे, इतना ही difference है. Fine. So let us go for the sixth sum. I think you will be able to do this. Fifth sum. Let me go for the sixth sum. Theory है, मैंने already ये आपको explain कर दी है. Question number 6. Find the probabilities to find the particle trapped in a box of length L in the region between 0.55 L to 0.45 L to 0.55 L for the ground state and the first excited state. Okay, specify kiya hai. You have to find the probability, right? Now what is our wave function? Normalized wave function that we have derived in our theory. Psi n is equal to under root 2 by L sin n pi x upon L. This is our wave function, right? Now what you have to find? Probability of find. Okay, ये L नहीं होना चाहिए, हाँ ये गलत है.
ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट मस्ट नॉट बी L. 45 और 55 ही होगा. Okay, so you have to find the probability of finding the particle between these two points. Now, what is the equation for probability? Probability is integration sin squared dx. If I am talking about one dimension, यहाँ पे limit आएगी. Generalized करो तो minus infinite to plus infinite, right? Now, in our case, for n equal to 1, okay, for n equal to 1, I can take probability 1. You have to find the probability of finding the particle in the ground state and the first excited state. Ground state के लिए n equal to 1 and excited state के लिए you will be taking n equal to 2. So let me go for 1. So probability for the ground state, if I denote it as P1, is equal to under root 2 by L integration, what is the limit? 0.45 to 0.55 sin square n pi x upon L dx, right? Then you need to do the integration sin square theta 1 minus cos 2 theta by 2. I think that you will be able to do. तो यहाँ पे n equal to आपको 1 लेनी है. Okay. Similarly, for the second excited state, I will be taking n equal to 2. Okay. So P2 is equal to under root, sorry, P2 is equal to under root 2 by L 0.45 to 0.55. हाँ हाँ हाँ, sorry. Okay. 2 by L sin square n equal to 2, I'll be taking 2 pi x upon L dx. Fine, so you please do the integration and then you will get the value of P1 and P2. Approximately, let me write the answer 9.098 आएगा और P2 जो है वो इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, 7 या ऐसा कुछ आता है इसका. ओके, सो इंटीग्रेशन ही करना है. आप लोग कर लोगे? इंटीग्रेशन करके लिमिट से लगानी है. विल यू डू इट? So please do it so that we will be able to complete our task, right? Integration है, so ये तो आप लोग कर पाओगे. Let us go for the 7th sum. ये क्या आया? 6th. Oh, 7th is not there. ये रहा 7th. X-rays of wavelength 22 picometer with photon energy 56 kilo electrovolt are scattered from a carbon target, and the scattered rays are detected at 85 degree to the incident beam. So what you are given? Lambda you are given. Incident wavelength 22 picometer. Incident energy you are given, that is 56 keV, kilo electrovolt. Theta you are given is 85 degree. What is the Compton shift of the scattered rays? So क्या find करना है? Delta lambda you have to find. You have to find the Compton shift, that is delta lambda. Okay. And ये मतलब I was having some doubt. I have to ask to Ankur sir, what percentage of the initial X-ray photon energy is transferred to an electron in such a scattering? So we'll not do this. Okay. I was having some doubt. I will tell you later on this. Okay, अभी मुझे याद आया. So we'll not do this. Let us go for delta lambda only. We'll find only delta lambda, not the other part. મને એવું લાગે છે કેમ અંધારું, પણ લાઈટ જ નથી કરી એટલે વાંધો નહીં. આમ તો બોર્ડ પર લખવાનું એક લાઈટ છે.
આપણે વેસ્ટ વોટરનું કામ કરવાનું 14 સેમ્પલ આવવાના છે. ખારીકટ કેનાલના છે. એમાં રિઝલ્ટ સારા આવે છે એટલે. टू 2.2 पिकोमीटर आ रहा है, सो 0.2 जितना होगा शिफ्टिंग. आर यू गेटिंग? डेल्टा लैम्बडा इज 2.2. Yes, ma'am. ओके. तो उसमें से आप लैम्बडा डैश भी फाइंड कर सकोगे. ओके, इफ आस्क्ड. मुझे परसेंटेज में थोड़ा पूछना है, आई वाज डाउट है, सो आई विल टेल यू इन द क्लास या ऐसा है तो. ओके, सो दैट विल सॉल्व लेटर ऑन. 8th सम भी आप लोग कर पाओगे. देखो, the work function of a target is 1.24 electrovolt, and the wavelength of the incident light is 436 nanometer. Then calculate the velocity of the photoelectron. What retarding potential is necessary to stop the emission of such electrons, right? So work function आपको दिया है, wavelength you are given, and you have to find the velocity of the photoelectron. So I can go for energy, right? E is equal to hc by lambda. And energy में से I can go for kinetic energy में से I can go for the velocity. Okay, so first you find the value of energy, उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में मिलेगा, जूल में कन्वर्ट कर दो, and then you go for the velocity 1/2 mv square. ओके, यहां से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. फिर उसमें से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिल जाएगा आपको, काइनेटिक एनर्जी बाय वी करके, ई करके. अब बंद कर दीजिए. पवन છે બહુ છે. શું છે? નેટ આવવાની છે, શું બહુ જોરશોરથી કામ ચાલુ કર્યું છે. કયા ટેબલ? આપણે આ ટેબલનું કંઈક કરવું પડશે. એ તો હું સમજી ગઈ. ટેબલ કેટલા છે સમજો? 2 5 4 9 10. ઓકે, આ 12 થી 15 જ છે. એટલે છોકરાઓ આવતા નથી એટલે
1 पॉइंट किसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू आप बोल रहे हो? कन्वर्ट किया था। तो मेरी क्यों 7.4 इंटू 10⁵ आ रही है? किसी और ने कैलकुलेट किया है? यस दीप, एक्चुअली वही मैंने बोला कि मुझे थोड़ा डाउट है उसमें आंसर में, सो आई विल टॉक विथ द अदर फैकल्टी एंड टेल यू। परसेंटेज वाला जो है ना वो अलग अलग सब आ रहा है, इसलिए आई विल टॉक विद दिस अंकुर सर एंड लेट यू नो। वन पॉइंट एट एट इंटू 10⁻15, वो भी कितनी बड़ी में वेलोसिटी आ रही है ना यार। मैक्सिमम 5 या 7 तक आना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सेवन पॉइंट सेवन इंटू 10⁻16, इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं होती। एनी अदर आंसर? कोई नया आंसर आया वो इसमें ऐसा कुछ है? मैम एनर्जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एनर्जी मैंने 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इलेक्ट्रोवोल्ट में। क्या आई आपकी एनर्जी? मैं करूं कैलकुलेट, रुको करके देखते हैं। 1.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रहा है। Yes, ma'am. हाँ तो वो 2 के करीब ही हुआ ना, मैंने तो ऐसे रफली बोला था 2 के करीब आएगा कुछ। तो उससे आपको वेलोसिटी ये मिल रही है, आप जो बोल रहे हो 10⁻7 वाली। मीटर पर सेकेंड एमकेएस में ही है ना? अरे नहीं, आप समझो, जो एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में मिली है आपको वो जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना आपको। वो किया था आपने? हाँ अभी करो, वो करके प्लीज देखो आप।
कितना है 7? हाँ, ये आया ना, ये वाला, राइट, वेलोसिटी इतनी आई 7.4 या 7.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो नाउ इट्स ओके। रिटार्डिंग पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी को ई से डिवाइड कर दोगे तो भी मिल जाएगा आपको, सो दैट्स फाइन। अभी फर्स्ट सम नहीं किया है, राइट? कई लोगों ने नहीं, कोई बोल रहा है ना कि हमने नहीं किए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा अच्छा, तो नाउ जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है उसके लिए जो ये क्यूएम के सम्स है वो सब हो गए, राइट? ट्यूटोरियल क्यूएम के कंप्लीट हो गए। इज एनीथिंग पेंडिंग? कुछ बाकी है? अच्छा, और no? So all the 3 tutorials are completed? Yes, ma'am. Okay, fine. So what we can do now, कितना टाइम बाकी रहा? 10 मिनट है। एंड कर दे तो मीटिंग क्या करे बोलो? ठीक है, चलो, फाइन। So thank you all of you.